चलो, how are you? Good. Sure. So let's continue. Persons who are new to this group, please go in the previous video, see the plan for today's lecture. Let's start. Chapter 1 or part 1, that is vector differentiation. So 3 points we have to deal here: grade, divergence and curl. What is gradient? Of a scalar field function. Don't worry about these things. Scalar field or vector field. Actually, what notes I have shared with you, in those I have also detailed all these things, basic things. So for this online lecture series, I try to ignore some other extra kind of stuff. Still, the thing is, these are very practical phenomena, bache. Suppose that there is a smoke in this room, so that will, or you open the door, so that smoke will go out in some direction. Okay, so you want to know what is the rate of change in the volume of that smoke that is coming out of the door. Or you, when you take bath in your bathroom in the winter time, so that smoke you feel, na? So what is the rate of change? Means what is that quantity, what is that volume which is coming out, suppose that in 1 unit of time from that window itself. Like gas pipelines, suppose that from the Tapi, Tajikistan se some gas is being flown to India. So how to maintain that pressure so that the pipe does not burst? The thing is, you have to calculate the rate of change of volume of something, expansion. If you are not able to get the expansion, you will not be able to calculate कि वहाँ पे कहाँ पे burst हो सकता है. So the thing is, they have physical significances. Those are written on the notes which are shared in the Telegram or Google Drive. So we will dealing here scalar field and vector field, means direction and magnitude, and only direction, only magnitude. Fine. So when we talk about gradient, bache, gradient is what? If we understand the basics of the gradient, we can solve each question of this CSE part. Not only vector calculus but fluid dynamics also. Acha. So as learners know कि sir always focus on the concept. So when I talk about gradient, before that I would like to tell you some basic features of differentiation. ध्यान से सुनिए. When I talk, suppose that you have a single variable function. आज आपको gradient ही clear कर देते हैं. Suppose that f of x is a function that may be like this, that may be like this, some other function g of x. So when I talk about what is the behavior of f of x in some particular domain, let's say I want to know what is the behavior of f of x from x1 to x2, means I want to know f of x is increasing or f of x is decreasing in some particular interval. So when I am talking about on this axis, so I will have some fixed dimensions to move, because either I can go from this left or right, or you can say in one direction only, because real line के ऊपर you can move this direction or left, right. Fine.
So I want to know when I move from x1 to x2, what is the behavior or what is the change kind of stuff in f of x. So this behavior, what बच्चे? This behavior is determined by what? Functions of one variable. I have already taught you. Sign of the derivative in that particular interval. So if it is greater or equal to 0, it is increasing. Less or equal to 0, it is decreasing. Okay. So ये तो बात थी किसके लिए? One variable function. Okay बच्चे? Now what happens if I have a function of two variables? What बच्चे? Function of two variables. So in case of function of two variable means the domain part itself will be like this. Suppose that we have a point here a comma b and I want to know what? I want to know change in z. What बच्चे? Suppose that from the point P to Q, let there is a point P that is x1 y1 and there is another point Q that is x2 y2. In case of real line, we have only unidirection to move. In case of 2D plane, I can move like this, I can move like this. मेरा मन करेगा मैं मजे लेके जाऊंगा. Getting my point? Ultimately, I want to know what is the change in z when I move from P to Q. Focus करना है इस चीज पर. In case of one dimension, we can move in the unidirection. In case of 2D, I can move from any direction. So in that case, suppose that z is a function of x and y. So if I want to write dz, how you write this? Dv z over dv x into dx plus dv z over dv y into dy. What this quantity says, because in case of one variable function f dash is enough to say, but what does this quantity says to you? This says बच्चे change in z. What बच्चे? Change in z with respect to x and y. With respect to x and y from some direction. Please focus on the word direction, and that direction itself is here nothing. If I want to write this quantity as, please focus here, if I want to write this quantity as can I write like this? Please check it out. And I represent this by dr vector. Okay? This is suppose that some quantity. Later on we will denote this by del z. Okay? So the thing is change in z from the direction of r vector, from some position vector r vector. So don't worry here बच्चे, as you were doing in the 2D 10+2 level पर 2D करते थे, वहां पर कोई जनरल पॉइंट p x y लेते थे. So like here in the vector form, that p itself is represented by xi cap plus yj cap plus zk cap. This also represented by r vector depending on 2D, 3D, 4D and so on. So if you are in 3D and if you want to write some general point p x y z, you can write like this, you can write like this also. Clear? You can write OP vector also if O is the origin.
Is that clear or not? So the thing is, when I talk about change in a function which is function of more than one variable from some direction, then that change itself is represented like this or represented like this. Clear? This is from the direction of dr vector. Now, the very important phenomena I would like to tell you here. Where I should write? Here? Okay. Directional derivative. Please focus on these words. Directional derivative. So, what is directional derivative? In some direction. What, bache? In some direction. So that direction is what? Suppose that you have some quantity f vector, okay, or suppose that you have some quantity del f vector, okay, quantity with that direction. You have some del f vector and you want to know, please listen, this is the key word of this chapter. You want to know what is del f vector in the direction of some arbitrary vector a vector. So getting something into direction of an arbitrary vector will be a quantity given by del f vector dot a cap. What will be the benefit of this? This will not change the magnitude of waves because a cap is nothing but a vector upon मतलब यूनिट मॉडुलस के साथ में है. क्लियर है? So please do remember this thing. In this whole vector calculus, I'll be using that. कि getting some vector function into some arbitrary direction, so that direction का unit vector आप निकाल लीजिए and keep it a dot product with that quantity, that function itself. Fine. So when someone asks what is gradient f in the direction of a vector, your answer will be, first you will find grade f means del f and you will then del f dot a cap. Please have patience, please have patience. So the thing is, point to notice is getting something into some arbitrary direction. Please focus here. Fine. So why I am much focused here, direction always. So directional derivative is a key word for us. Directional derivative. अच्छा बच्चे बताओ, डेवर f over डेवर x क्या होता है? Tell me. What? अभी आइए यहां पर. If I say कि I want to move on the 2D plane बना इस पे, I want to move in the direction of x axis only or parallel to x axis only. It means y is constant. So if y is constant, then dy will be 0. So this will reduce to dever z over dever x into dx kind of stuff. Means change, please note it down, change in the z parallel to x axis or in the direction parallel to x axis or on the x axis will be nothing but dever z over dever x only. So partial derivative for any function with respect to x, y or z, dever z over dever x, here z is the function of x and y, so dever z over dever x, please note it down, is nothing but a special kind of directional derivative. Is that clear or not? Dever z over dever x is, dever z over dever y is nothing but a special kind of partial derivative which represent, please focus the word again, change. Because you will have question from here, either in the CSC or IFS. Change in z.
So change in z in the direction of x will be given by derivative z over derivative x kind of stuff. Change in z in the direction of y, derivative z over derivative y kind of stuff. But change in z in some arbitrary direction, how that will be calculated? For that, what I will be dealing is, I will be dealing derivative z over derivative x, derivative z over derivative y, derivative z over, अभी two functions का है. Suppose that f is a function of x1 x2 xn, then I will kind derivative f over derivative x1, derivative f over derivative x2, dot derivative f over derivative xn. Okay. Now I want to get the change in f in some particular direction. तो वो जो डायरेक्शन आपको दे रखा है, सपोज दैट दे हैव गिवन 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. What your duty is, find a cap divided by this vector code, and within this del f or del z, take the dot product of del f with this a cap. You will get the change in f or z in some particular, in some that direction a vector. क्लियर है? चेंज ओके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ओके. दिस इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फॉर z. अभी यहां पर एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, प्लीज हैव पेशेंस, क्योंकि एक बार चीजें क्लियर हो गई ना, देन यू विल एंजॉय. सपोज दैट x itself a function of t and y itself some function of t, and c represents a curve for x and y. Suppose that x is r cos t. यहां पर मान लो, suppose that x is r cos t, y is r sin t. So c is a circle. What बच्चे? c is a circle with radius r. Clear? So suppose c is a curve with these parametric equations, then this dz upon dt, please focus, this dz upon dt will be nothing ठीक है. सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो यहां पर d रख सकते हैं. अगर मोर देन वन वेरिएबल है, phi t थीटा भी होता है कुछ और फंक्शन, तो यहां पर डे पर हम अप्लाई करते हैं चेन रूल से. सो दिस dz upon dt is called as the directional derivative of z in the direction of the curve c. क्लियर है अभी पॉइंट? Here this quantity itself is called grade of z. del z को बोलते हैं gradient of z. Is that clear or not? dd is clear, grade z is clear. Now the another important concept is, एक तो यहां से dd, यहां से ग्रेड. अनदर कॉन्सेप्ट इज कि ग्रेडियंट f. एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग इज, एक बोर्ड पर इसलिए रख रहा हूं ताकि यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दोस. इसको मिटा देते हैं. डायरेक्शनल डेरिवेटिव आई गेस क्लियर, ग्रेडियंट इज क्लियर. नाउ द पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इज ग्रेड ऑफ, सपोज दैट z हमने या f कोई फंक्शन लिया, लेट्स से z इज अ, अभी मैं समराइज कर देता हूं, z इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn. ओके. नाउ dz और x1 x2 xn मान लो some other functions of psi t and so on, मतलब t के functions है. So dz upon dt will denote the directional derivative of z in the direction of c. Fine. Second, del vector z. Del vector is nothing but I cap derivative over derivative x plus j cap plus derivative over derivative y, x1 x2 xn. तो यहां पर x1 i कैप, x2 j कैप ऐसे करके नोट कर देंगे. x1 x2 plus x3
plus xn. Don't worry, we have to work only for 3D only. R3 में ही हम काम करते हैं यूक्लिडियन प्लेन में, so we have to deal only I cap, J cap, K cap. But you should understand, those are not I cap, J cap, K cap type of things. Things is unit vector in the direction of x1 axis, unit vector in the direction of x2 axis, unit vector in the direction of xn axis. Fine. So del of z. Clear? This quantity itself here only. Day 1 over day 1 x, I cap, day 1 over day 1 y, z cap kind of stuff. So this will be denoted by grade of the function z, where z is a scalar field function. If z is a scalar field function, then grade z will be a vector field function. Check it out. This you are getting vector now. The next point I wish to tell you is what is the grade f, or what represent actually grade z. Okay, gradient of z. So this basically represents the slope. What बच्चे? Slope in the some given direction c. So for that, suppose that अपने पास यहाँ पर जो मैंने क्वांटिटी लिखा था del z वेक्टर in some arbitrary direction a वेक्टर del z, तो इसका बच्चे क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ del z डॉट मॉडुलस ऑफ a वेक्टर dot b vector equals to what? Modulus of a vector dot modulus of b vector cos theta. Now I want to know कि if, देखिए ना बच्चे, please focus here. If a vector is a tangent vector to the level surface z. Suppose that this is my some surface, और इसी के ऊपर I took this vector as a vector, tangent vector at some point. Clear है? Now, what happens is, if I do del z dot a vector, then in what case? Check it out. If this is like on this level surface only, so tangent इसके जब level पर है, so theta का value what we can consider as 0. Not at all. Del z vector, del dot a vector, if it comes out as 0, try to focus here. If this dot product comes out as 0, what I can say dear? Del z vector is a vector normal or perpendicular to the level surface z. इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे. Very important for you. So what are the 3 points for you? Number first is directional derivative. Number second is gradient. Number third is gradient of some scalar field function is a vector which is always perpendicular to that level surface f. Is that clear or not? Please do remember this thing. Any issue? अच्छा. This thing कहाँ गया? Del dot z वाला कहाँ गया? If del z, अच्छा लिखा तो था. Del z dot a vector. इसका reasoning you have to find. If you are not able to find, do let me know in the comment section. चलो अभी आगे बढ़े. इसके अलावा हमें और कुछ इसमें नहीं चाहिए ग्रेडियंट में. Now we will be dealing questions for each of the case and we will learn how this gradient part will be asked in the exam. Okay. Sure.
Okay, let's have some questions here, dear. Level surface already told everything. चलो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग. The question is, write the question please. The directional derivative. What is the question? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Question है the directional derivative and UPSC, CSE, IFS. All aspirants, one question will be there. The directional derivative of f of x y z equals, कुछ फंक्शन दिया है हमें, x square y z plus 4x z square. The directional derivative at the point 1 minus 2 minus 1 in the direction of the vector 2i cap minus j cap minus 2k cap. So this is a question for us, and with this question only I would like to tell you कि what is the procedure we have to follow. Please learn this process, life will be easy. So whenever he asks anything like directional derivative, please listen, greatest rate of change, increase, decrease, anything, the step 1 is find del f. मतलब इतना कर देना है बिना पूछे लगे, लाख लपेट के, ठीक है. अभी बता रहा हूं क्यों करना होता है. सो डेल एफ क्या हो जाएगा बच्चे, आई कैप डेवर ओवर डेवर एक्स प्लस जे कैप डेवर ओवर डेवर वाई प्लस के कैप डेवर ओवर डेवर जेड. एफ इज व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x z square. So this will be turning out as डेवर ओवर डेवर एक्स ऑफ दिस फंक्शन. अभी मैं सीधा लिख दूं, आई कैप डेवर ओवर डेवर एक्स ऑफ दिस फंक्शन. सो क्या हो जाएगा 2x yz प्लस 4z स्क्वायर आई कैप प्लस j कैप डेवर ओवर डेवर y ऑफ दिस फंक्शन. सो सेकंड वाले का तो 0, इसका हो जाएगा x स्क्वायर z प्लस k कैप डेवर ओवर डेवर z ऑफ दिस फंक्शन. तो क्या मिल जाएगा मुझे, x स्क्वायर y प्लस 4 to the 8 x z j कैप. सो क्या शो कर रहा है ये आपको कि डेल f इज अ वेक्टर व्हिच इज गिवन बाय दिस. किस पॉइंट पर चाह रहा है, सो दैट इज द स्टेप 1 के अंदर ही सब स्टेप एट द पॉइंट 1 minus 2 minus 1. So put x की जगह 1, y की जगह -2, z की जगह -1. So you will have from here as del f लिखा मैंने at the point. So 2 minus 2 plus 4 that is 8. So 8 I cap minus j cap plus y माइनस ये माइनस का आ जाएगा तो माइनस 10 k कैप. चेक आउट प्लीज. एट दिस पॉइंट डेल f. तो दिस इज द रिक्विजिट. व्हाटएवर क्वेश्चन इज गिवन टू यू, गो फॉर दिस. नाउ किस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में. सो दिस इज द गिवन वेक्टर a वेक्टर. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, step 2, find del f dot a cap. समझ में आया, पूछा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव. पीछे जाइए वीडियो में, what I told you, dz upon dt, check it out. del f vector dot dr वेक्टर लिखा था, तो dr की डायरेक्शन में था. इफ a वेक्टर की डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, del f dot a cap. सो पूछा था उसने dd, लेकिन क्वेश्चन किसका था, ग्रेड f का. क्लियर है अभी. चल अब क्या, ग्रेड i कैप माइनस j डॉट
इस ए वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई कर दो 2i कैप माइनस a कैप माइनस 2t कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 4 4 3 बाहर निकलेगा 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो दिस विल बी ए स्केलर वैल्यू दैट इज नथिंग बट check it out. So this is a beautiful question required for UPSC CAC IFS exam as well. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ अभी. ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे. सो अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे हमारे पास. अच्छा यहीं से कर लेता हूं. The next question is, ध्यान से लिखिएगा इसको. The temperature T at a surface is given by. अब इसको मिटाइए नहीं क्योंकि अभी हम कंक्लूड करेंगे. मजदूरी करने का कोई शौक नहीं है. If we are studying, we need to conclude, we need to consolidate the things. The temperature T at a given surface is given by T equals x square plus y square minus z full stop. In which direction? दोस्त underline. In which direction a mosquito at the point 442 on the surface will fly so that it cools fastest. So that is the question for us. What बच्चे? So the thing is, what I need to calculate, क्वेश्चन के अंदर आपको जो दे रखा था, T दे रखा है, the direction पूछा है, okay. So again, model question for us. What you need to do is, यहां पर एक एग्जाम पॉइंट आप लिख लेंगे and do remember this. The greatest rate of increase. The greatest rate of increase always occurred in the direction of del f. Greatest rate of increase in f, ठीक है, and decrease in minus del f. Please do remember this, otherwise you will not be able to solve questions from this chapter. Ultimately whenever क्या पूछ रहा है बच्चे, please focus on the question. पूछ रहा है कि ये टेम्परेचर है और बोलता है कूल्स फास्टेस्ट. फोकस ऑन दीज वर्ड्स. दिस इज सीसेड काइंड ऑफ स्टफ ना. सो मॉस्किटो मान लो उसने ज्यादा मेरा खून पी लिया है, अभी वो ठंडा होना, खून पे गर्म हो जाएगा ना, तो वो किस डायरेक्शन में तेजी से दौड़ लगाए कि उसका टेम्परेचर तेजी से कम हो जाए. क्लियर? और टेम्परेचर इटसेल्फ इज डिफाइंड एज, ये जो लेवल सरफेस है, जिस इस सरफेस का टेम्परेचर दैट इज गिवन बाय दिस. क्लियर है? सो व्हाट यू वांट टू चेंज, व्हाट यू वांट टू चेक इन द क्वेश्चन. सो योर टारगेट इज, पहले पता करो भैया माइनस डेल एफ है क्या, और माइनस डेल एफ जब मिल जाए तो माइनस का डेल एफ एट द पॉइंट किस पर चाहिए, मॉस्किटो कहां पर है, 442 पर. हो गया काम खत्म. डायरेक्शन पूछा था उसने, चेक इट आउट. इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन मींस वेक्टर, तो और यही तो दिख रहा है ना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो
Please do remember this point. CSE, IFOS, IIT JAM, everyone. Whenever someone talks about greatest rate of increase, greatest rate of decrease, you have to find ultimately gradient f. अब इंक्रीज पूछेगा किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एफ और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एफ फॉर डिक्रीज. इज दैट क्लियर और नॉट? एनी डाउट? सो अभी क्लियर हो गया कि ग्रेड से कैसे फंसाएगा आपको. डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ सकता है. अच्छा, यहां पर इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता था. प्लीज फोकस. ये आस्क कि चलो किस डायरेक्शन में तेजी से भाग रहा है एंड इन विच डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड की जब भी बात करेगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, व्हाट बच्चे, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की जब भी बात करेगा तो मॉडुलस ऑफ ग्रेड एफ, मतलब ग्रेड एफ तो आपको निकालना है उस पॉइंट पर, जो भी पॉइंट P है, और उसका मॉडुलस निकाल देंगे तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. और इफ यू फाइंड द डेल एफ ओनली तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा. डोंट फॉरगेट टू कैलकुलेट एट द पॉइंट. ओके बच्चे, इज दैट क्लियर और नॉट? मुस्कुराइए, आप YouTube चैनल उपेंद्र सिंह पर है. चलो, अच्छा लगता है जब समझा लेते हैं. मुस्कुराइए आप लखनऊ में. ओके, सो ग्रेडियंट आई गेस एनफ फॉर यू. अभी एनफ नहीं, एक और केस है इसके अंदर. नॉर्मल और टेंजेंट पता करना किसी लेवल सरफेस का, और उसी के अंदर सब कैटेगरी है दो सरफेसेस. टू सरफेसेस आर गिवन, देन फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. मजा विल कम नाउ. ग्रेडियंट से ही पूरा मजा आता है, बाकी का तो एप्लीकेशन है. डाइवर्जेंस और टर्न. So what happened now? Suppose that another kind of question, first, second, third, ठीक है? वो दोनों को तो फर्स्ट में डाल देंगे. Another kind, मान लो मेरा एक लेवल सरफेस है मेरे पास कोई भी, ओके बच्चे, and I want to know, suppose that this is the level surface phi1 xyz equals to some constant c. Suppose that we have another level surface that is psi of x y z is some constant c dash. Fair? Chalo. What I can have? Please focus. Question 1. Type 1. Find tangent. What बच्चे? Finding tangent or tangential plane to the normal surface या normal to the surface. Normal to the surface phi, or finding tangent plane, normal tangent plane or normal. ठीक है, इसको ऐसे at some point P. कहने का मतलब suppose that there is a point P on this level surface and you want to find what is the tangent plane at this point. Okay बच्चे? So that is one kind of question. Or you want to know what is the normal. Okay? So that is 3D में जा सकता है. अभी मैं थोड़ा सा बचूंगा वहां पे स्ट्रेट लाइन बोलने से, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे. Still अभी सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ a straight line मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा. So thing is, suppose that you want to find tangent plane or normal plane, normal line at some point P of the given surface. क्या करते हैं बच्चे? What do you used to do in the 2D part 10+2 level पे? You just take an arbitrary point P. So suppose that x, y, z three variable function है. So what I will have, this also can be written as xi cap plus yj cap plus zk cap, or this you can also write by position vector r vector.
क्लियर है? अब आपने क्या किया, ये तो पॉइंट को x नॉट y नॉट z नॉट दे दिया और एक इसको मान लो p नॉट बोल रहा हूं और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया p। ऐसे समझते now you want to know what is the tangent plane at the point p naught. So for finding that curve, what we used to do, we take some arbitrary point and try to use the condition. बस इतने में हो गया। अच्छा, इसको मैं डिनोट कर देता हूं r नॉट वेक्टर से। ओके बच्चे, आर्बिट्रेरी इज बाई r वेक्टर और फिक्स्ड पॉइंट इज बाई r नॉट वेक्टर। तो बच्चे मुझे ये बताना, r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर will be a vector on the level surface phi or not? क्लियर है? ग्रेड फाई क्या होगा ये बता दो मुझे। इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द लेवल सरफेस फाई। अभी अभी हमने देखा था। So this is a vector on the level surface. Grade phi is a vector normal to the surface. So what is the angle between them is pi by 2. So क्या हो जाएगा, if this vector, because grade phi itself a vector ना, so r vector minus r naught vector dot del phi, this is del phi, will be 0. So whenever someone says find the equation of tangent plane at a given point to some level surface, तो क्या करना होगा बच्चे? स्टेप 1, राइट r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर, तो क्या मुझे मिल जाएगा, x माइनस x नॉट i कैप, y माइनस y नॉट j कैप, z माइनस z नॉट k कैप। दूसरा टास्क आपका क्या होगा, फाइंडिंग डेल फाई। फाइंडिंग डेल फाई, डेल फाई अपने को मिल गया i कैप डेवर फाई ओवर डेवर x प्लस j कैप डेवर फाई ओवर डेवर y प्लस k कैप डेवर फाई ओवर डेवर साइन। And you use these in this equation, you will have the मजा। क्या मजा आएगा अपने को? देखो यहां से जरा i डॉट i1, तो क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इंटू डेवर फाई ओवर डेवर x प्लस y माइनस वाई नॉट डेवर फाई ओवर डेवर y प्लस z माइनस z नॉट डेवर फाई ओवर डेवर z equals 0 and this is not a function। ये डेवर फाई ओवर डेवर x किस पॉइंट पर, p नॉट पर। So in case of 3D plane, what is the equation, ax plus by plus cz plus d equals 0। So देखो, this is some value constant ना, so ये जो आपको इक्वेशन निकल कर आएगा वो इस फॉर्म का होगा या नहीं, that will be in this form or not। So this is the equation of plane। So another category of questions is you have been given some level surface phi and asked to find a tangent plane at some point। तो दोस्त पूछो तुम कुछ भी, what I have to do whatever you ask, what I have to do, I will just write grade phi at the point p naught, sorry, at the point p naught, and will use this condition कि del phi or grade phi is a vector which is always perpendicular to the normal, that level surface phi। अब इस normal line का भी बाजा बजा देते हैं। What will happen? The same procedure। normal के लिए देखिए, r vector minus r naught vector, इस पर एक वेक्टर होगा, and if I want to know the normal का equation at the point p naught, so what will happen, grade f is a vector normal to the surface and I also want a vector which is normal to the surface, so these two vectors will be parallel or not,
If these two vectors are parallel, इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 और पाई you can say. So in that case you will have the equation like this. हो गया r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर, हमने एक जनरल आर्बिट्रेरी वेक्टर माना अपने नॉर्मल के साइड में, और ग्रेड f खुद में इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस, ये दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल की हमने कंडीशन लगा दी, आई हैव दिस कंडीशन. So ultimately whenever someone asks कि find the normal to some given surface phi, so क्या करना है बच्चे अपने को, tell me, simply find del phi at the given point and take the cross product of these two products. So cross product कैसे डिफाइन करेंगे, i cap, j cap, k cap, इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो सपोज दैट डेल ओवर डेल x, डेल ओवर डेल y, डेल ओवर डेल z, और दूसरा वाला वेक्टर r वेक्टर माइनस r नॉट क्या है, x माइनस x नॉट, y माइनस y नॉट, z माइनस z नॉट. So from here you will have this what? This is waiver phi over x. Sorry, because this del phi वेक्टर क्वांटिटी है. अभी आपका ये जो इक्वेशन मिलेगा, प्लीज फोकस एट द पॉइंट P नॉट. जब आप इसको जीरो वेक्टर को पुट करेंगे, जीरो वेक्टर मींस जीरो i कैप प्लस जीरो j कैप प्लस जीरो k कैप. सो कंपेयरिंग ऑन LHS एंड RHS you will get something like x minus alpha upon L equals y minus beta upon m equals z minus gamma upon n, because three quantities you will have ना, वो तीनों separately अलग अलग जीरो के हैं तो उन तीनों को equal, we can write those as equal. So this is a equation of straight line. What बच्चे? Equation of straight line in 3 dimension. Moreover it is in symmetric form. What बच्चे? It is in symmetric form. Clear है? So these two questions are clear or not? इसी का एक बच्चा वाला पार्ट और बन जाता है. What I suggest you, please जो questions आपको दिए जा रहे हैं PDF में भी है, please solve those examples. Extra questions will be also provided, but at least इतना ही कर लेंगे ना, you will have that confidence to do the questions. So regarding all these questions, these two parameters, these two dimensions, please solve examples. Example ही कर दिए, सब कुछ solve भी किया, और क्या क्या है इसमें. चल, इसी में एक थर्ड कैटेगरी और मैं बना सकता हूँ. मैं क्या बना सकता हूँ, क्वेश्चन में भी दिया. मान लो हमने जो दो लेवल सरफेसेस लिए थे, फाई और साई. If I want to know what is the angle of intersection, what बच्चे? Angle of intersection between two level surfaces. What is the angle of intersection between two level surfaces? Let's say phi of xyz equals to c and psi of xyz equals to c. So such question, please mark star here. We'll be using multiple in the multiple chapters this concept. So to get the angle of intersection between two level surfaces, बचपन में हमने क्या पढ़ा था? Angle of intersection between 3D में भी we will be dealing, means angle between tangents at the point of intersection. This we have studied. Clear or not? Angle of intersection between the tangents at the point of intersection. Here you can also say the angle between normals. What बच्चे? Angle between normals at the point of intersection of these two surfaces phi and psi. So how this question will be dealt here in the grade wala chapter? Tell me. So if someone asks angle of intersection between two surfaces, you need to find angle between normals. Normals क्या है? If phi is given, तो del phi क्या होगा? A vector normal to this surface.
डेल साई क्या होगा, ए वेक्टर नॉर्मल टू दिस सरफेस, दो वेक्टर मिल गए आपको, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना आएगा क्या, क्या होता है, a vector dot b vector is nothing but modulus of a vector modulus of b vector into cos theta, a vector is del phi, b vector is del phi, दोनों का मॉडुलस एट दैट पॉइंट, यहां से cos theta का वैल्यू आपको मिल जाएगा, लेट्स से इट इज कमिंग आउट फॉर एग्जांपल 1, सो थीटा इज 0, लेट्स से इट इज कमिंग आउट 1/√2, सो थीटा इज π/4, सो अल्टीमेटली क्या हुआ, इफ दे आस्क एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो उन्होंने दे दिया या यू नीड टू फाइंड उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर P पर डेल फाई फाइंड कर लीजिए, P नॉट व्हाटएवर पॉइंट इज गिवन, डेल साई फाइंड कर लीजिए एंड जस्ट फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन डेल फाई एंड डेल साई, क्लियर, एंड दैट विल गिव यू द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दोस टू सरफेसेस. Am I clear? Gradient part is clear or not? सो अभी आई गेस लेक्चर का टाइम पता नहीं कितना हुआ, कंटिन्यू करें डाइवर्जेंस और कर्ल पे. चलिए थैंक यू कन्हैया जी, कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को. क्योंकि डाइवर्जेंस और कर्ल में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, द एप्लीकेशन पार्ट will be dealt in the theorems and line integral and surface integral volume वाले में, but the introductory part I will do here only. Please solve all these three kind of examples, please solve in the PDF part, solved questions are given, ठीक है. इधर ऑनलाइन लेक्चर में अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को. अच्छा, ग्रेडियंट में ही प्रॉपर्टीज वाला पार्ट एक और है. कर्ल ऑफ सपोज दैट सम phi of x y z equals constant is a given level surface, you want to find कर्ल ऑफ ग्रेड phi. अब कर्ल ऑफ ग्रेड फाई जब पता करना है तो मुझे पहले कर्ल पढ़ना होगा ना, या अदर प्रॉपर्टी इज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ सम वेक्टर. अब अगर ये पढ़ना है तो पहले डाइवर्जेंस पढ़ना होगा ना मुझे, तो बोला पढ़ा दो मास्टर, है ना, पढ़ाएगा मास्टर. डाइवर्जेंस पे आते हैं. सो जैसे अपना स्केलर फील्ड फंक्शन है वैसे ही इफ समथिंग, जैसे मैंने गैस वाला आई गिवन यू द एग्जांपल ऑफ गैस फ्लो. सो गैस विल बी फ्लोड, सपोज दैट एक पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान से इंडिया आ रही है, तो उस पाइपलाइन में जो व्हाटएवर द गैस और लिक्विड इज बीइंग फ्लोड, तो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पता करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट द डाइवर्जेंस ऑफ दैट फ्लो. क्लियर है? प्लीज डू फोकस दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्ड, because in case of fluid dynamics multiple times you will be using that. Divergence of a vector field function. अरे द्रवचंद जी एसी चला दीजिए, गर्मी लग रहा है. थैंक यू. So when I talk about divergence of a vector field function, let f vector is some f1 of x y z I cap plus f2 x y z k cap plus f3 x y z j k. We are working in the R3 only, so in case of divergence, so this is called divergence of f vector. How it is defined? Del dot product. Okay बच्चे, so if I want to write this, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? अभी इजी है, जल्दी से मैं खत्म कर दूंगा इसको.
because the more elaborated concepts will be used later only. So this will come out as day var f1 over day var x plus day var f2 over day var y plus day var f3 over day var z. So if you can observe, it is a scalar quantity. For example, some mass, volume, उस टाइप का जो stuff रहता है, so for that we need to calculate divergence of f. Curl f. Curl f vector is defined by del vector cross f vector. So cross vector कैसे define करते हैं? This is day var over day var x, day var over day var y, day var over day var z. This is f1, f2, f3. Ultimately it comes out as day var f3 over day var y minus day var f2 over day var z of I cap plus minus whatever you use j के लिए day var f3 over day var x minus day var f1 over day var z j cap plus day var f2 over day var x minus day var f1 over day var y k cap. Fine. So curl of some vector function is a vector itself. Divergence of some vector is a scalar quantity. Fine. So with these definitions, I can have multiple kind of questions. Two properties, those are exam points for you. Curl, this is always related with the rotation kind of stuff. What बच्चे? Rotation. और इसीलिए फ्लूइड डायनामिक्स में vortex motion जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर we use this curl of f vector. अच्छा, I guess हिंदी ज़्यादा यूज हो रहा है. Here may be different from UP. चलो. So one word will be used कि f vector is irrotational. तो उसका जो कर्ल है मतलब उसमें कोई रोटेशन नहीं है. That means curl f will be a zero vector. Okay? Here will be a word solenoidal. What बच्चे? Solenoidal. कि f vector अगर solenoidal है, then divergence of f vector will be a zero value. So please focus these two words. क्योंकि in case of fluid dynamics we will be using q vector का irrotationality. Even 5 chapters of the starting part वो deals with the rotational curl of q. ठीक है? q vector velocity vector होता है वहाँ पर. पूरा fluid dynamics इसी पर ही घूमेगा. So these 2 points you have to notice here. Now you will have n number of examples in your PDF. Just finding की divergence find करो किसी point पर. कोई vector solenoidal है तो use this condition and try to conclude something. You can have something to conclude from there. Irrotational kind of stuff से you will have something to conclude. What I am gonna do is वो जो दोनों properties है मैं उनको यहाँ पर आपको बता देता हूँ. Rest of the examples you can try. In the PDF they are given, easy only. जहाँ मेहनत करनी थी मैंने कर दी. चल. Point is curl of grade 5. Why I am focusing on this? Because these 2 points will be used later on, so we should remember these. Curl of grade 5 is 0 and divergence of curl is 0. Divergence 0 point. ठीक. Curl this one is 0. अभी देखिए बच्चों. Since grade 5 is what? I cap day var 5 over day var x plus j cap day var 5 over day var y plus k cap
neighbor phi over neighbor z. So कर्ल ऑफ ग्रेड phi क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ यानी कि क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस ग्रेड phi. So this will be I cap, j cap, k cap. This is neighbor over neighbor x, neighbor over neighbor y. This is neighbor phi over अभी देखिएगा if I want to write the coefficient of I cap here, this will be neighbor 2 phi over neighbor y neighbor z, and this will be neighbor 2 phi over neighbor z neighbor y. So if phi is differentiable means phi is continuous, so these two quantities are equal, so this turns out to be 0 I cap. Similarly other factors you will have, okay, so this turns out as 0 vector. So please do remember this property. Similarly divergence of curl, the same process you can follow and you can prove that. Now I will suggest you, there are some questions like someone asked divergence of r vector by r cube. So don't worry, don't panic about such questions. What teacher told you, just get a rhythm. R vector क्या है, xi cap plus yj cap plus zk cap. So modulus of r vector is nothing but, उसको r से डिनोट कर दिया जाता है, and it is square root of x square plus y square plus z square. Ultimately we remember this thing. Okay बच्चे, why I am sticking here, because in many of the questions you will be using this. So as a mentor it's my duty to tell you where you can start. So whenever you have quantity like this, you just start from it. What बच्चे, start from it. Whatever you need, suppose that you need neighbor r over neighbor x. So यहाँ से you can write, देखिएगा r is this, so neighbor r over neighbor x क्या बन जाएगा, 1/2 r, this is square root of, और x square का 2x, so this will be nothing but x by r. ऐसे ही similarly neighbor y over neighbor r, y upon r, neighbor z over neighbor r is z upon r. And you know PhD is nothing but learning smaller things at the higher level. So how easily I am telling you these things, you may think यार इसका क्या है यार, ये तो मैं बचपन में भी कर लेता था. But why I am telling you here, when you will solve the question ना, you will realize कि such things are frequently used here. So that is some supportive kind of stuff, some motivation to do such examples. Okay, one more suggestion, whenever, एक तो ये चीज रहेगा suggestion 1, suggestion 2 is try to observe symmetry. Try to observe symmetry. So veteran, from the side of veteran I am telling you, whenever you are calculating such examples, such questions, suppose that you observed I cap का coefficient क्या बन रहा है, then try to find the symmetry और j cap और k cap के coefficients. Many times, maximum times it will be possible कि after doing मनरेगा मजदूरी here, what? After doing मनरेगा मजदूरी for this, if you are thinking कि यार how much cumbersome this process is, you will leave, you will quit, and the winner is who don't quit. So observe the symmetry here. You will come to know कि अच्छा यहाँ आराम से लिख दिया, जो मेहनत थी केवल एक में कर लीजिए मेहनत, only once you have to do the hard work, that will be used here. So for such questions, that is my suggestion for you my बच्चे. Okay, so for part 1 things I have tried best, जहाँ जितना intense मुझे रहना था, I tried my best. Whatever thing you think कि such things are also included,
that will be also included automatically because I know how to manage this lecture series. Okay, so keep learning, keep smiling, and don't forget to motivate me. Okay, put your suggestions, put your words, put your love words for me. Actually, I enjoy that, I love that. It makes me feel very confident to keep it on. So keep learning. Good luck. We'll meet in the next lecture for लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, दैट इज पार्ट 2. वहां पर कर्ल ग्रेड का बहुत अच्छा यूज है. ओके, चलो गुड लक.